everyone. We are in Telangana now, and we are at Nehru Outer Ring Road. So this is a beautiful outer ring road made in Telangana, Hyderabad. बोलते हैं ना कि हैदराबाद आया भाई तो चार मीनार जरूर देख के जाना. हमें आज चार मीनार देखने का मौका नहीं मिलने वाला है बिकॉज ये वन डे टूर रहने वाला है. बट हैदराबाद गए और बिरयानी जरूर खाएंगे हम. तो guys, I'm gonna show you what biryani I eat, and I'm gonna enjoy Hyderabadi biryani for dinner tonight. So I'm heading to the hotel now to freshen up and check in my luggage and all. So meet you guys soon. अभी हम लोग नेहरू आउटर रिंग रोड में है और आप देख सकते हो ये एक 8 लेन हाईवे है. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पीड लिमिट 120 का दिया हुआ है. बट 120 बोलने से ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी उड़ा सकते हो. बी सेफ, ड्राइव सेफ, एंड आई एम एंजॉइंग दिस आउटर रिंग रोड. इट्स अ वेरी स्मूथ रोड. सो आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिख रहा है आउटर रिंग रोड. So this outer ring road connects directly to the Hyderabad airport. So people commuting from Telangana, they can reach Hyderabad airport, which is in Telangana actually, much shorter and faster through this road. What's up guys? So I have reached Hyderabad finally, and I have checked into this hotel called Oyo Townhouse. So I'm gonna take you to a short tour of the hotel and my hotel room. So come along with me. Come in. So this is Oyo Townhouse, and this is the reception area. So I'll take you to the room now. And this is the restaurant area. As you can see, Oyo Townhouse has a lot of stickering work done on the walls. Even the lift area has stickering, some artworks. So the creativity they have shown in the walls is through stickers, and it's a little bit unique also. So I'm going to show you the different walls and my room too. Going up. So guys, we are in the 3rd floor now, and you can see the wall over here. And let me take you to the room now. There's one more artwork over here, a person playing the piano. So that's a flower vase. So come on. So this is my room. It's a small and a cute room. This is the master bed. As I mentioned, white, red and grey is their color scheme. So you see the frames, it's red outline, and there's a window over here. But since it's night time, I'm not able to understand what I can see or what is the view on the other side. So I have TV, have my dressing table, and that's my wardrobe, and this is the washroom. Also I have Savlon to sanitize my things, the things that I'm gonna touch. So I've sanitized it before. So this is my room guys. I hope you guys enjoyed. So if you're in Hyderabad,
or Telangana, Oyo Town House is a recommended place for you guys to have a short stay. Guys, अभी रूम टूर तो ख़त्म हो गया है. अभी बिरयानी तो हमें खाना है भाई. जैसा मैंने बोला, हैदराबाद आया और बिरयानी नहीं खाया तो किधर हैदराबाद आया. सो मैं अभी बाहर जाके तो बिरयानी नहीं खा सकता हूँ. सो मैंने स्विगी से ऑर्डर किया हूँ. एंड देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड पैराडाइज बिरयानी. सो आई हैव ऑर्डर्ड बिरयानी फ्रॉम देयर. ऑल्सो आई एम गोना शो यू हाउ माई बिरयानी इज एंड हाउ इट लुक्स एंड हाउ द पार्सल कम्स once the parcel guy comes. So stay tuned, and I'm super excited to have my biryani and call my day an end. Guys, finally अभी मेरा खाना आ चुका है and I've ordered biryani from this place called Paradise Biryani, and it also says world famous biryani. So I'm gonna enjoy the biryani, and जैसे कि आप देख रहे हो सालन और रायता भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया हुआ है. So I don't know whether I'll be able to finish this whole portion of veg biryani, but yeah, I'm gonna enjoy. Tan-ta-dan! Guys, check out this quantity. मुझे नहीं लगता कि मैं ये finish कर पाऊँगा, but this is veg biryani, and I have raita and salan, so I'm all set to dig in. So guys, stay tuned and good night. Have a nice day. Shubh Ratri. What's up guys, a very good morning. और मैं बहुत जल्दी उठ चुका हूँ. 6:30 on the clock, and मैं आपको मेरा रूम का बाहर का व्यू बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात को हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि खिड़की से क्या दिख रहा है. So I want to show you what I'm seeing from my window. So as you can see, this is a police station, and over there the Deputy Commissioner of Police Shamsabad, Saibabad. So आजू बाजू में फुल प्रोटेक्शन है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है. And it's very clean also. Good morning guys. Subscribe to my channel Tattoo Wala Talks. एंड वेरी गुड मॉर्निंग. आप वेदर देख सकते हो, बहुत ही एकदम ठंडा है. मैं बाहर आके पहला स्वेटर पहन लिया हूँ, क्योंकि ये ठंडी जमरा नहीं है. इट माइट बी अबाउट लाइक 20 degrees over here, but I'm loving it. So enjoy your day. Good day. Oh guys, 8:30 बज गए and time for a complimentary breakfast. सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट खाने जा रहे हैं और उसके बाद रूम चेकआउट करेंगे. मेरा काम तो इधर हैदराबाद में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसके बाद हम निकलेंगे. गाइस, तो मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे है एंड अभी ब्रेकफास्ट खाने वाले हैं. उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और 11-11:30 तक फिर चेकआउट करने वाले हैं. सो ये है इडली सांबार विद चटनी एंड ब्रेड और बटर. So एक सिंपल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. I'm on my way back from Hyderabad. So I've stopped at सोलापुर, एंड ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट नेम वासुदेव. आप अगर सोलापुर से पास कर रहे हो या आप सोलापुर में हो तो यू कैन विज़िट दिस प्लेस. इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, फूड भी बहुत टेस्टी था. सो हम लोग स्नैक्स के लिए रुके थे. Hey guys, so finally my one day tour to Hyderabad comes to an end. I am in the outskirts of Pune, like I have like about 40-50 kilometers to reach Pune, but I have to reach Mumbai, not Pune. It's 10:30 p.m. on the clock. I hope you guys enjoyed my video, and you guys got to see a lot of things on the way to Mumbai to Hyderabad, and I was able to capture as much as footages as I can for you guys, and those things that people haven't seen I was able to capture in my vlog. So if you guys enjoyed my vlog, don't forget to hit the like button. Also smash the subscribe button down there and hit the bell icon so that you get the notification when I upload my next video. So I'm ending my vlog here. So till then, this is Rahul Venkat signing off.